guys, welcome to my channel. I am Swapnil and I make videos on fashion, style tips, beauty tips, lifestyle, everything. So आज का वीडियो है declutter करके कैसे आप अपना लाइफ बहुत easy बना सकते हो. Okay, so there are few things in your life which you should declutter so that you live a simple life. And yeah, मैंने extensions लगाए हुए हैं ताकि मेरे बाल लंबे लंबे लगे क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं. And I thought थोड़ा change करते हैं, हम दिन भर घर पे रह रहे हैं. Let's change it up and let me know कैसा लग रहा है ये एक्सटेंशन. ऑल्सो आप मुझे अपने प्लीज सजेशंस बताइए कि आपको किस टाइप के वीडियोस देखने हैं, सो दैट आई कैन कम अप विथ मोर एंड मोर सच वीडियोस विच यू गाइज रियली लव. सो द फर्स्ट थिंग जो आपको डिक्लटर करना चाहिए वो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स विच आर एक्चुअली एक्सपायर्ड. आई नो आपके पास ऐसे बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स होंगे जो एक्चुअली एक्सपायर हो चुके होंगे और आपको पता भी नहीं होगा. एंड देन यू कीप ऑन बाइंग न्यू थिंग्स एंड देन यू डोंट यूज द ओल्ड थिंग्स एंड देन इट gets all messed up. फिर आप अपने स्किन में लगा लेते हैं, then your skin kind of breaks out. That's not good for you. So yeah, obviously अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा मेकअप कितने टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए, you can watch so many videos. YouTube में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस टाइप का मेकअप कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद वो कब एक्सपायर हो जाता है. लाइक फॉर मस्कारा इट्स 6 months. जिस दिन आपने मस्कारा ओपन कर लिया उसके बाद से 6 months तक यू शुड यूज़ इट एंड देन यू शुड थ्रो इट आउट बिकॉज देन इट गेट्स सो मेनी बैक्टीरिया एंड सो मेनी बैड थिंग्स विच गोज टू योर आईज. दैट्स ऑफ कोर्स नॉट हेल्दी फॉर यू. सो या, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट you should declutter, and trust me, when you start decluttering you will have so many things to declutter from your beauty and your skincare. Now the second thing is duplicate items. Now you will have so many duplicate items, like sometimes we forget कि हमारे पास ये item already घर पे है and then we keep buying on duplicate items. Now this will apply in everywhere, even in your kitchen, in your bedroom, in your bathroom, in your makeup kit, in your skincare kit, in your shampoo. Like sometimes हमारे पास shampoo already रहता है, हम सोचते हैं वो खत्म हो गया and then we buy more shampoo and then these all are duplicate. Then sometimes we have a charger which then we keep on buying charger and then you have so many chargers, so many headphones. So if you're not using them, please throw it away or donate them or give it to someone who really needs those. You will feel very light. Third thing is email. Now I'm guilty of this और मेरे पास I guess 62,000 emails unread है, which is so not correct. You should not have so many unread emails in your phone. What you can do, आपके पास जब भी टाइम मिले, just go through your emails and delete them if you don't need them. If you need them, just put it on, you can put that star so that वो important रहेगा हमेशा and you can find it easily. And unsubscribe from some of the emails जो आपको daily आ रहे हैं, monthly आ रहे हैं, but you really don't need them, you don't use them. Unsubscribe from them, so that will be very less clutter. Thing which comes to my mind is social media, Instagram, YouTube. ऐसे अकाउंट्स से अनफॉलो कर दो जिसको भी देख के आपको डीमोटिवेशन लगता है, अनमोटिवेटेड लगता है, या उनका कंटेंट आपको पसंद ही नहीं है. देन डोंट, देयर इज़ नो वे, लाइक देयर इज़ नो यूज ऑफ फॉलोइंग देम. बिकॉज इफ समवन इज मेकिंग यू फील डीमोटिवेटेड, इफ समवन इज मेकिंग यू फील जेलस, इफ समवन इज मेकिंग यू फील कि यार इसकी लाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, विच इज़ सो अनट्रू. हर किसी की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है. ऑब्वियसली कोई भी इंस्टाग्राम में अपना रोता हुआ चीज़ नहीं डालेगा, वो ऑब्वियसली अपना बेस्ट पार्ट डालेगा. सो या, डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स, डोंट गेट कॉट अप. मेरा तो हिसाब यही है कि यू शुड नॉट गेट कॉट अप, बट इफ़ यू आर समवन हु डू गेट्स कॉट अप इन ऑल दोज थिंग्स, please unfollow the accounts which do not buy you, like which do not bring you joy. You can follow some accounts जो actually इंस्पिरेशनल कोट्स डालते हैं, मोटिवेशनल कोट्स डालते हैं, पॉजिटिव वाइब्स का कोट्स डालते हैं. आई फॉलो सो मेनी ऑफ देम. आई रियली लव रीडिंग सच पॉजिटिव कोट्स थ्रू आउट द डे. इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी कीप सेन एक्चुअली. ऑब्वियसली हर लड़की के जो हैंडबैग में जो वो पूरी दुनिया समा के घूम रही है,
उसको भी डिक्लटर करने का टाइम आ गया. यू हैव सो मच टाइम नाउ, यू कैन नॉट कंप्लेन दैट यू डोंट हैव टाइम. सो प्लीज़ 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 अपने हैंड बैग्स को खोलो, उसको पहले खाली करो और उसमें जो बहुत सारी आप दुनिया बसा के चल रहे हो उसको डिक्लटर कर दो. आपका हैंड बैग भी कम भारी रहेगा. आई डोंट इवन नो कि आप उस हैंड बैग में और क्या क्या लेके घूम रहे हो. सो बेटर डिक्लटर यार, आपका लाइफ भी ईजी रहेगा. So yeah, that was few things which you can declutter from your life to live healthier, happier, lighter. If you did like this video, please comment down below, like, share and subscribe.